Hello, hello. We are back with more questions to do. मैंने थोड़े बहुत करे थे ऑस्ट्रिंग शायद यही एक करा था पता नहीं मैंने डाला था या नहीं आई डोंट रिमेम्बर तो 56 87 जितना भी आई डोंट okay I have already solved this but looks like a very serious solution बहुत लंबा था shortest string okay okay so एक string चाहिए जिसमें से ये भी subsequence हो सकती है ये भी subsequence हो सकती है okay Hmm. okay 1000 so if I do something like मैं इन दोनों के में लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस अगर मैं निकाल लूँ राइट जैसे बी इसमें क्या है इसमें तो आई थिंक ए सी ए बी ए बी इज लॉन्गेस्ट कॉमन राइट यप ए बी तो कहने से ओके ए बी है ए बी से पहले क्या चाहिए नेक्स्ट वन नथिंग एंड स्ट्रिंग टू से पहले आई नीड सी सो वी हैड ए बी देन वी हैड सी ए बी के बाद क्या चाहिए व्हाट आई नीड इज ए सी तो इसे डाल दिया उससे कुछ नहीं चाहिए But this will work. Okay, but what about in between, right? That is the main thing. Let's say we AB था common subsequence longest. This had C in between. This had E at the last, right? But let's say this had a Z. These are the two strings, right? These are two strings. These are two strings. इन दोनों में longest common subsequence क्या है? AB, AB, right? So I'm gonna be like मेरे आंसर में AB तो आएगा. Okay, okay. Then आई नो कि ए बी से पहले मेरे को ये चाहिए ए बी के बाद मेरे को ई चाहिए एंड ए बी के अंदर मेरे को जेड चाहिए सी ए जेड बी इज कैन दिस आंसर ए जेड बी एंड सी ए बी ओके आई थिंक वी कैन डू समथिंग लाइक दिस सो द फर्स्ट पार्ट इज मेकिंग द लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस कॉमन finding out the largest common subsequence अच्छा दिस इज द जेड है ना अगर मान लो ए बी हम्म ओके आई थिंक लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस तो चाहिए ही से पहले वो करते हैं जरा सो इफ आई जस्ट गो लेंगे स्ट्रिंग वन इन टू इज इक्वल टू लेन ऑफ स्ट्रिंग टू राइट dp is equal to longest common right so we can initialize at 0 into n2 for dash in range and 1 right so अपनी dp ऐसे हो गई then we can say okay so longest common subsequence कैसे निकालते थे for any I okay for any j okay for I in range and 1 for j in range into right
इट इज बेटर कि मैं स्टार्ट करूं, बट देखते हैं अगर ये दोनों सेम है. इफ string 1 of I is equal to string 2 of j, then I can very confidently say dp of I and j is equal to the length, right? So एक तो इससे आ गया कॉमन, right? dp of I minus 1 j minus 1, right? Else dp of I of j is equal to, what is the longest answer to this क्या होगा? Minimum of dp of I minus 1 of j या फिर dp of I से j minus 1. Whatever is better, वो होगी. Okay, but this will not work for any case जब I 0 या j 0, क्योंकि j minus 1 I minus 1 छूट जाएगा, right? So let us initialize those ऐसे ही for I in range n1. That means j अपना fix है 0 पे. So dp of I, j when it's fixed, क्या होगा ये? It should be, तो j मेरा fix है 30 तक, right? What is the longest common subsequence? अच्छा, अगर I am finding the longest, तो math होगा ना. The longest common subsequence, if they are the same, right? If string 1 of I is equal to string 2 of 0, then तो 1 होगा, then 1 है, right? Else it's gonna be the maximum of, या तो ये पहले 1 मिला एक आगे मुझे, या फिर 0. अब इसमें भी अगर I can say if string 1 of 0 is equal to string 2 of j, so not j, 0, then तो dp of 0, 0 वाला केस is equal to 1, वरना तो 0 रहेगा. And now I can say कि I का भी 0 ना हो, I can do this for all the j's. And then I can do the same thing except यहाँ पे it's going to be n2. This has to be j. This has to be string 2 of j is equal to string 1 of j. I is fixed at 0. This is fixed at j. Otherwise, this is 0. This is j. And 0 की जगह j minus. Okay, so first of all, I minus 1 and 0 here. यहाँ पे j minus 1 and 0 था. Right, this is what we need, I think so. Yeah, looks good to me honestly. Okay, so यहाँ पे again should I start from 1? 1 तो मैं कर जाऊँगा ना. अच्छा नहीं, 1 के लिए फिर बाकी करना है ना. When I is 1, I need to see for j2, वो तो नहीं हो रहा. अच्छा, 1 के लिए तो हो ही नहीं रहा. Okay, so 1 ये अपने हो गए. 1 से you can start from 1. And you will not fall in the problem I minus 1 j minus 1 की दिक्कत. At the end of the day, we can max. अच्छा, but this is only the length. मेरे पास sequence थोड़ी है. Getting the sequence is 10 times more pain in the ass than just getting the length of me. क्योंकि getting the sequence now, you have to backtrack in this matrix and fuck me. I don't know that. So अपना let's see अपना थोड़ा जुगाड़ू लगाते हैं. कोई TTP बनाते हैं. Let's try that. I don't think that will work, right?
deleting some numbers from character keys possibly. I don't think so that has worked. ABAC is just कुछ लेंस वन तो देख तुझे डीपी लगा लेते how the fuck I'm supposed to get this from the DB अगर A है then the result is gonna be A जैसे अपना DP सीधे यही आंसर स्टोर करती है you loop for INJ if those INJs are the same we are gonna be like okay okay these INJs are same लास्ट वाला सेम रखो जो पिछले वाले का शॉर्टेस्ट वो था वो तुम्हारा आंसर है then I'm gonna be like okay but what if they're not the same I think जुगाड़ू भी कर सकता है जैसा ना copy this so that अगर नहीं चलते I can continue so let's say जुगाड़ू में we need again the same thing string 1 into is equal to then of string 2 is equal to क्या empty string करूँ what should I do should I keep it as an empty string or let's keep it as an empty string what does it would matter I don't think so it would matter that much into or dash and range and on okay so if string 1 of 0 is equal to string 2 of 0 we can say dp of 0 comma 0 is equal to जो भी ये है character right else it's gonna be else क्या होगा दोनों का addition right okay now when my I is 0 I mean j is 0 तो मैं j हमेशा 0 right it's only c if the c is the same if string 1 of c c by I is equal to string 2 of 0 then db of I is equal to 0 is equal to string 1 of starting से लेके I तक including I so I need I plus 1 right अगर लास्ट कैरेक्टर सेम है right तो स्टार्टिंग से लेकर वहाँ तक ले लो वही तुम्हारी स्ट्रिंग है तो वो तुमको स्ट्रिंग 1 का तो चाहिए एल्स अगर वो सेम नहीं है अगर वो सेम नहीं है
If they're not the fucking same, what we can do is dp of I and 0 is equal to nothing but, okay, so we have one option. एक पीछे वाला ऐसे चेक कर यार, उसका क्या था? या 5 minus 1 of 0 plus 2 of 0, कुछ ऐसा होगा क्या? तो C आया, A B है. I'm gonna be like, पहले C आया, उसके बाद 0 0 तो AC हो गया, right? Then B आया, I'm gonna be like C. Are they same? No, they are not the same. Okay, okay. What can the answer be? एक काम करो, A C है, A and C का क्या था? A C था, तुमको B चाहिए बाद में, तो A C भी कर दो. And A C B is a valid answer. अब A आ गया एक और. I'm gonna be like, okay, not the same. A C A. A A C B था तुम्हारे पास पहले, तो A C B A कर दो, and you still have a valid answer. जैसे सेम आ गया तो you're gonna be like A B A C कर दो, simple. Otherwise, लेकिन let's say we had like A B C D E and this was C, right? तो पहले का होगा A C, दूसरा क्या होगा? A C B, then बन जाएगा A B C. Then I'm gonna be like, come at D. At D, I'm gonna see they are not the same. They are not the same. तो जिससे जो पहले था वो उठाओ and then D डाल दो. D डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ मैं? ओके, नहीं C ही डाल रहा हूँ. I was just talking wrong. तो जैसे string 1 आएगा ना, string 1 आएगा क्योंकि string 2 तो इसमें included है. string 1 सॉरी, इसमें भी string 1 ही तो डाल रहा हूँ. ABCD डाल दो. It is technically correct. It is correct. Okay. और कोई केस हो सकता है which I am not considering. Yes. This gets corrected because same पे आ गया. Okay, okay. String 1 of 0 नहीं, string 1 of I think so. क्योंकि हम I minus 1 तक हमने ले लिया and वो भी ले लिया string 2. अच्छा सॉरी, यहाँ पे आएगा ना string 1 of I. D. Here, इससे पिछले वाले में string 2 of 0 is already included and string 1 of I was not included. Okay. And the same thing we can do with N2. Now this is string 1 of string 2 of j is equal to string 1 of 0, then so it's quite nice. Then it's fine. अगर string पहला कैरेक्टर string 2 को j के इक्वल है तो जितने भी j में है वो वहाँ तक ले लो भाई सारे, ऐसे है. अदरवाइज वी कैन गो कि उससे पहले चेक करो, उससे पहले वाला चेक करो एंड जो बचा क्या string 2 में हम आइटरेट किया तो string 2 जो बचा वो डाल दो. Now for I in range, now we can make the entire dp, okay? For j in range 1 comma in 2. Okay, so we can say if string 1 of I is equal to string 2 of j, if they both are the same, what are we going to do? We can just take the previous one, add these two new characters, I think so. Then this means dp of
यहाँ पे जीरो आएगा. This means dp of I and j is equal to dp of I minus 1, so j minus 1 plus this character, whatever this character is, in 1 of I, right? Else dp of I and j. Yeah, I'm fucking writing on. Okay, but they're not the same. They are not the fucking same. You have two options. You have two options. या तो dp of I minus 1 करो j तक, right? And then I वाला तुमको चाहिए तो I डाल दो यार, plus string 1 of I. Or the second option is dp of I तक ले जाओ सारा, then j minus 1 करो. And j minus 1 करने के बाद we need a j as well, तो string 2 of j कर दो. Right, these are the two options that I have. What I want to see now is min custom comparison pattern. मतलब वीकेंड जैसे सॉर्ट करते हैं, जैसे हम सॉर्ट करते हैं वी कैन यूज अ कस्टम कंपैरेटर सो दैट अलग बेसिस पे सॉर्ट करें द की आर्गुमेंट एंड देन आई डोंट केयर अबाउट दैट आई एम गिविंग की. ओके आई थिंक सो. कैन आई समथिंग लाइक दिस मिनिमम ऑफ यहाँ से यहाँ तक बट these are strings. I want the key to be lambda function which takes an x and returns len of x. I think this should work honestly. And then after doing all this, can we return dp of n1 minus 1 n2 minus 1? Hopefully we can. Let's see. Okay, I fucked up somewhere. This has to be 0 because I is a fucking constant. Okay, and I fucked up. Fuck me. Okay. Okay. Hmm. This is not good. I wanna see dp bunny camera for row. dp, let's print row. Okay. So when my I is 0, if A है मेरे पास, then AC, that's correct. That is correct. What about JCA? CA answer should be CA. What the fuck? What the fuck? How the fuck? I0 है J1 है वहाँ ना. J1 में B कहाँ से आ रहे हैं बहन के लोग में? I am doing some fucked up something. When my I is 0 when my J loop कर रहा है 1 के लिए, string to a okay, the string to of J. This is this thing here. Okay, this is equal to. This is equal to. Oh fuck, I plus 1 क्यों कर रहा हूँ मैं? That with J plus 1. Lovely, lovely. Love this shit, man. On fucking god, love this shit. Holy fuck, let's see. Fuck, no. No fucking way.
No fucking way, man. You're giving me memory. Eh? Eh? What the fuck? What the fuck is this? What the fuck is this? Holy fuck. What the fuck is this shit, man? either you pass all the test case या फिर किसी टेस्ट केस में मेरी लिमिट एक्सीड हो गई. I mean इसकी memory would be pretty bad. इसकी memory would be n square into n plus n1 plus n2. It's going to be n1 into n2 plus into n1 plus n2. It's going to be this n1 into n2 into 1 plus n2, which is pretty horrendous space complexity के लिए. But the only fucking reason is क्योंकि स्प्रिंग पे काम कर रहा है एंड स्प्रिंग्स को खुद की अब स्पेस चाहिए. I mean then the next reason is first find the length. After you find the length, then generate the answer. Hmm. Let me try to submit the answer again. Okay, it gives 50 out of 50, but limit exceeded. Good shit. Okay. Okay. I mean, the answer is correct. That's the good thing. That is the good thing. The answer is fucking correct because I passed all the test cases. इसमें दिखा भी नहीं रहा कि किस टेस्ट केस में गलत आया बस किसी टेस्ट केस में गलत नहीं आया. Okay. So now next thing that I have is जो मेरा पहला fucking my bad. Okay. Okay. So मैं ये कर रहा था right. Hmm. ओके. पहले 1000 की जगह 500 होता तो चल जाता है शायद. ये भी नहीं चलता. मैक्स लेंथ इज इक्वल टू ये तो आपके डीपी का n माइनस n1 माइनस 1 से n2 माइनस 1. Now the sad part is now I have to fucking backtrack. अब मेरे को याद नहीं रहता कैसे तो backtrack. So my I is equal to I comma j is equal to my n1 minus 1 comma into minus 1 while I is greater than equal to 0 and j is greater than equal to 0. हमको क्या काम करना है? Okay. Okay, so let me do one thing. पहले let me see इसकी dp दिखती कैसे. So row in dp print row. Let's see. Fuck man. कुछ नहीं.
अभी कैपिटल एस कहाँ लिख दिया बहन। आंसर टू विच इज AVR कैपिटल। तो मैं टू पे यहाँ से आ सकता हूँ, यहाँ से आ सकता हूँ। यार डायगनली भी अच्छा। ओके नहीं। थोड़े सी की इन दो पोजिशन पे सेम C and D, they're not the same. They're not the same. तो मैं बोलूँगा कि यू विल नॉट मूव डायगनली, यू विल मूव हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, जो भी तुमको ज़्यादा देगा। आई थिंक ये यहाँ से ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स ये है, तो मैं यहाँ जाऊँगा। इज दिस द सेम? ये है A एंड देन B। आई एम गोना बी लाइक हेल ना। तो मैं ऐसे करते करते यहाँ आ जाऊँगा, विच इज B एंड B। आई एम गोना बी लाइक सेम। तो पहला करेक्टर है ना B है। अभी कहाँ से आ सकता है? वन से आ सकता है, वन से आ सकता है, तो मैंने इस पे शिफ्ट कर लिया। व्हाट इज दिस? दिस I0J इज वन। I0J1, I0J1, I0J, I0J1 सेम कैरेक्टर है। तो ये ओके, सो दैट्स हाउ यू फकिंग ओके। इफ string 1 of I is equal to string, so longest common subsequence भी निकाल देता हूँ पहले। longest common subsequence is nothing but an empty list। अगर string 2 और j के बराबर है, देन आई नो कि यहाँ पे शायद से मेरे को मिला है कॉमन। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस प्लस इज इक्वल टू ये कैरेक्टर। एंड में हम रिवर्स कर देंगे क्योंकि हम रिवर्स ऑर्डर में एक्चुअली डाल रहे हैं। नाउ वी मूव टू द डायगोनल राइट। I minus equal to 1, j minus equal to 1, else what is the else part? या तो ऊपर से नीचे से, जो भी तुमको ज़्यादा दे रही है वो उस पर जाओ। if dp of I, let's say I minus 1 से ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन अगर I 0 हुआ तो another fucking piece of shit to deal with। जब मेरा I 0 हो जाएगा some case, तब मेरा -1 तो भाग देगा। Let's do one thing। अगर I is equal to 0, then we have no option, we have to move j minus 1, right? And if j is equal to 0, then I को ही मूव करना पड़ेगा, right? वरना PC कौन सा बेटर, what is fucking better for us? And वो कैसे देखेंगे? We are gonna see like if, do I need another if statement? I think so। if dp of I minus 1 j is greater than dp of j I सेम, j में कम करो, j minus 1, then we can say तो I minus 1 बेटर है अपने ले जाने के लिए, तो I में चले जाओ, वरना j पे चले जाओ। Right, and then we should have
LCS इज इक्वल टू LCS का रिवर्स। ओके, आई गेस ये था ही बड़ा क्वेश्चन, तो प्रिंट LCS। लेट्स सी LCS क्या आ रहा है। ए बी विच इज करेक्ट, एंटर सही होगा, आई डोंट नो। लेट्स मेक अ टेस्ट केस A B C Z Z E F G Z Z E F, क्या है इसका? A B Z Z E F G तो है। So we have the LCS। LCS का मैं क्या कर सकता हूँ, भाग बोल रहा। अब मेरे को स्ट्रिंग वन में LCS ढूंढना है, स्ट्रिंग टू में LCS ढूंढना है। This is so fucking annoying। जो मैंने पहले सबसे पहले जो फरवरी में करा था, कितने लाइन का था? नो क्लू मैं क्या कर रहा था, मैंने क्या लिखा है। अब मेरे पे LCS आ गया, राइट। ओके, तो कहने से अगर मेरा LCS तीन लेंथ, दो लेंथ का ए बी, तो कितने स्पॉट्स है ए से पहले बी के बाद ए बी के बीच में? तो तीन। अगर ए बी सी डी है, एक दो तीन चार पाँच, राइट। ओके, तो लेफ्ट ओवर्स इज इक्वल टू a list of an empty list for dash in range len of LCS plus 1, right? So एक लिस्ट में क्या आएगा, वो this is a list which contains all the characters we need before this, right? Okay, perfect, perfect। तो पहले स्ट्रिंग वन से उठाते हैं, पहले क्या करते हैं, स्ट्रिंग वन से उठाते हैं। सो स्ट्रिंग वन से उठाने के लिए करंट, करंट LCS इंडेक्स क्या होगा मेरा? 0। अगर LCS की लेंथ ही नहीं हुई तो if LCS is equal to an empty string then string 1 plus okay, okay then panda current LCS is going to be at 0, we are going to say hey man, what do I need, what do I need, what do I need? Okay, what I need is very simple, it's very simple. Loop in this string 1 for I in ring string 1, loop here, loop in string 1 to find this, find this, find this thing. Whatever the fuck we are searching for, I don't fucking know. I really don't fucking know. Okay, what are we searching for? If
if if if if this character string one is if this is what we are looking for, right? LCS of current LCS, we can say this as LCS index, right? If this is what we are searching for, then perfect, perfect. Get it, get it. Once you do get it, wait a second. I'm a fucking dumbass. I think I'm a fucking dumbass. जो मेरा मेमोरी लिमिट एक्सीडेड हरा रहा था उसमें से I can drop a fucking N1. You have to be joking, man. Okay, वो भी try करके देखते हैं. Because this thing can be optimized further. If string 1 is equal to LCS of index, so LCS index plus is equal to 1 कर दो. Else where is this going to be? कहाँ जाएगा ये कैरेक्टर जाएगा string 1 leftovers में leftovers का LCS इंडेक्स के अंदर चले जाओ string 1 of 5 and I need to do the same thing for string 2 for Jane whatever shit if string 2 of J is LCS index person and that is not enough otherwise this index पे जाना था string 2 of J कर दूंगा अभी आया एक सेकंड में okay okay so we know तो हमने string 2 J को डाल दिया now our answer is going to be for LCS index in range len of LCS index और leftovers में ये फाइनल डाल देते leftovers okay never mind this यार ये कर लेते हैं doesn't matter leftovers of LCS index क्योंकि उस इंडेक्स के जस्ट बाद में कोई चाहिए राइट LCS of LCS index leftovers के ठीक है perfect अब leftovers में जो भी है I just need to add it result is equal to an empty string for I in range for
group in leftovers for character in group. Result plus is equal to the character and we can return a fucking result out. fucking 80 लाइन का कोड तो इस चू करके लिखना पड़ा एंड तब भी गलत है क्या गलत है cannot be interpreted as integer then of string 1 is n1 is going to be n2 string index out of range ऐसा तो नहीं हो सकता उन्होंने तो enough string on what the fuck are you saying या तो LCX index चला गया but that also shouldn't happen अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है if LCS index less than len of LCS क्योंकि जब वो आखिरी में चले जाएगा जब वो आखिरी में ऐड कर रहा होगा जैसे अगर 3 है तो वो जब वो थर्ड इंडेक्स है कि फोर्थ इसमें जैसे लास्ट एलसीएस के लास्ट कैरेक्टर के बाद वाले इसके लिए जब ऐड करेगा तब तो इसको यही करना है बट इट इज अगेन चेक तो ये कर रहा है ना तो ये चेक नहीं करना है अब नॉट शुड ओके देन ऑफ एलसीएस fucking hell man now this should work अगर मैंने कुछ पकड़ नहीं दिया डीपी में okay it works and surprisingly it has a very good time but okay now we can fucking hell man fucking can we optimize it further I don't think so why because sure हम we can get this answer we can optimize and get this in O of n space लेकिन हम LCS नहीं निकाल सकते if we don't have the entire matrix हम LCS नहीं निकाल सकते so we cannot optimize that further I don't think so I mean yeah okay never fucking mind it fucking भयंकर मैंने इसमें छोटा कैसे कर दिया मतलब एक ही उसमें वो कर दिया दैट्स फाइन अच्छा वो भी अच्छा इसने जो करा है जो मेरा वाला है जो मैं अभी करने वाला हूँ मतलब तो ये ओके तो मेरा सबमिशन हिस्ट्री ओके लवली सब इसमें क्या है यू सी द डीपी चेक आउट द डीपी मैन चेक आउट द डीपी दिस इज फाइन दिस इज फाइन क्या मेरे को आई माइनस वन जे माइनस वन ही चाहिए तो मैं बहुत सारे आई माइनस वन क्यों रखता हूँ आई डोंट नीड दैट आई डोंट फक नीड दैट शिट so I can remove this n1 and you can remove this n1 I don't give a shit about n1 so I can remove this as well as yeah I think so क्योंकि आई तो अब है नहीं अपने में I think I can remove this then j the first row when I is 0 तो ये संभालेगा राइट लेकिन j को अब मेरे को 0 से स्टार्ट करना है आई हैव नो ऑप्शन अबाउट दैट
I can't do anything. Okay, right. अब इसमें एक और चीज़ डालनी पड़ेगी. If j is equal to 0, what do I have to do? सबसे पहले, do I have to make a new dp? I think so. I can make a new dp. Yeah, I think so. I need to make a new dp maybe. Mm, I minus 1 of j and then same I. Right, मतलब current I पीछे जाओ या फिर जो पहले से ही था वही रखो. I don't think I need a new dp. I don't think I need a new dp. But if j is my 0, if j is my 0, j is your fucking 0. 0. So, what do I have to say? I got 0, 0. अगर ये सेम कैरेक्टर्स है, if string 1 of I is equal to string 2 of j, this is the same goddamn fucking character. So dp of j होगा 0 होगा, j to time 0 that is going to be nothing but string 1 कहाँ से कहाँ तक, I तक. So that means I plus 1. If they are not the same, not the fucking same, then they're not the fucking same. तो जो भी पहले था, राइट, I minus 1, that means जो भी पहले था प्लस string 1 of I think this is what we have to do, and then we can continue. अब ये वाला केस है, so we let's just move this side. I minus 1. अच्छा, I minus 1 j minus 1 चाहिए मेरे को, राइट. तो मैं I minus 1 j तो ला सकता हूँ, तो मेरे को न्यू dp चाहिए, न्यू dp लिखना. I need a new dp is equal to this shit. So new dp of j is equal to this shit. वरना new dp of j is equal to पिछले वाले j तक. ये तो सही है. अब ये सेम है. सो न्यू dp क्या होगा, ये पिछला वाला है तो सेम dp of j minus 1 plus 2 of I. otherwise dp of first string of I होगा न्यू dp of j. मैंने बोला ये दोनों सेम है, राइट. आई डोंट केयर अबाउट दिस शिट. तो इससे पहले क्या था, असली कैरेक्टर वो सही है. न्यू dp of j is nothing but I minus 1 में जा रहा हूँ, या फिर because we are working on the current file, the string to j, and then we can, after doing all this, we can say dp is new dp, and then I can say dp return कर दूँ. Will this work? Okay, effective something. अच्छा, okay. So अब पहला कैरेक्टर तो है नहीं मेरा, राइट. तो dp of 0 ही होगा ये. और j in range 1 के लिए पहली रो भर दो. पहली रो भर दी.
माय बैड। तो यहाँ पे क्या होगा, डी आई एम वर्किंग विद राइट। ओके, सो वंस अगेन इसमें आई इज 0, so they are the same characters. I is 0, they are the same characters. जितना भी है, if they're not the same characters, so string का 0 divide I think that's fine. String object is not available. Uh, okay, let's try to submit. It's better space. It should not give memory when it exceeded. And yeah, it did not. But okay, but the time is absolutely fucking ass. Time is absolutely fucking ass because it's n2 into n1 plus n2. Right? That is what the time constant is. N1 n2 into n1 plus n2, which is n1 n2 plus n2 square. तो ये n2 square extra काम हम कर रहे हैं. But space is quite good. Space is really good. Let me see क्या बोलता है इसके टाइम. n into n बोल रहा है, just technically correct. Not really. अगर n2 बहुत बड़ा हुआ तो this is n square. But हाँ, no. But this is a better code, much more fucking readable. उसने 100 भांग वो उल्टा करा. एंड इतना बड़ा सवाल है, तो 1 घंटा तो एक सवाल में लग जाता है. लाइक एक्चुअली 1 घंटे से मैं कर रहा हूँ. डिस्टिंक्ट सब सीक्वेंसेस. जीट कोड से है तो आई एम कॉपी पेस्टिंग जैसे जी0. You have two strings essential return the number of distance of sequence of s is equals to. Okay. 1000. आई थिंक ये भी वही है, 2DDP लगा हुआ है, हो गया काम तुम्हारा. ये सारे सेम सवाल है सब, स्पेशली स्ट्रिंग सब सीक्वेंसेस वाले. तो ये करने से पहले मेरे को सर 5 मिनट का काम करने दो. 5 मिनट के बाद मैं भी वापस आता हूँ. 5 मिनट्स.
ओके, आई एम बैक, माय बैड। तो ये भी 2D पे लग रहा है। ओके ओके। So if I have the S, I have I J है, I want to be like लूप लगाओ। अगर दोनों सेम हैं कैरेक्टर्स, both the characters are fucking same, तो तुम्हारी डीपी का महाभूषण होगा। तुम्हारा डीपी का महाभूषण होगा कि डीपी का भांग भूषण क्या होगा? डीपी का भांग भूषण। बोथ द फकिंग कैरेक्टर्स सेम, कितने सीक्वेंसेस होंगे? अच्छा, ओके। और दोनों का लास्ट कैरेक्टर सेम है तो मैं दूंगा। इससे पहले कितने बन सकते थे? जितने भी बना सकते थे उसमें से +1 हो जाएगा। अरे +1 नहीं होगा, वही सेम सेम आई थिंक कैरेक्टर्स बना पाएगा। या +1 होगा? +1 तो नहीं होगा, सेम नहीं होगा। आरेगी, आरेगी। So I'm gonna be like, okay, last character तो सेम, आरेगी आरेगी। अच्छा, so इनमें आंसर वुड बी इन सबका सम, आई थिंक सो। So let n1 be len of s, n2 be the len of t, right? If I make a dp, ये लेकिन n1 के लिए बनेगी, आई थिंक सो, या n1 if s of 0 is equal to t of 0, dp of 0 is equal to 1, वरना कोई तरीके नहीं है। Right, then I can loop for I in range 1 से n1, this is for j equal to 0, when j is 0, t से मेरा r तक है। if I is equal to क्या, if I क्या है भाई, equal to I नहीं बताऊंगा। if I is equal to baby, okay,
तो एक ही कैरेक्टर है, राइट? इफ टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू एस ऑफ आई, ऐसी बात है। तो कहने से नाउ अब आई हैव वन मोर वे। जब मेरा टी सिर्फ आर है तो कितने तरीके से बना सकता हूँ, जितने भी आर मेरे को मिले अभी तक, राइट? सो डी पी ऑफ आई इज इक्वल टू वन प्लस डी पी ऑफ आई माइनस वन, एल्स dp of I is equal to dp of I minus 1, right? Now I can look for j in range। जीरो के लिए तो ये काम हो गया, अब ये काम होगा वन से लेके तक, एंड फॉर I in range n वन से, राइट? इफ I अगर जीरो के बराबर है, सिर्फ एक है, अगर सिर्फ एक है, मेरे पास सिर्फ एक, अगर मेरे पास सिर्फ एक एस है कि पूरा टी बनाने के लिए, तो मैं भी टी से एक ही बना सकता हूँ ना भाई। अगर टी की लेंथ एक से ज़्यादा होगी, मतलब जीरो से जैसे आगे बढ़ेगा टी, जो कि इस केस में हो रहा है क्योंकि जीरो पे तो मैं कर चुका हूँ, तो आंसर जीरो है, तो उसका सेम रख सकता हूँ मैं। आई जब जीरो है तो उसके सारे जीरो ही हो गए एक्सेप्ट जीरो का जीरो, एंड जीरो का मैं ये कर रहा हूँ, so I don't need this। I can say if s of I is equal to j of I, right? Now we have a way, that means dp of I is equal to, can udp चाहिए मुझे? अब इसमें क्या होगा, पिछले वाले dp से I माइनस वन, आई माइनस वन है, जे माइनस वन तक कितने बच सकते हैं? नहीं बच सकते, तो वी वुड बी नीडिंग a new dp। न्यू dp is equal to dp of j minus 1, else new dp of j, else new dp of j किसके बराबर होगा भाई? ये होगा, अगर मान लो सेम नहीं है, देखो मेरे को टी तो मैं मूव कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? अगर देखो टी तक सारे चाहिए, राइट? आई थिंक थोड़ा सा मैंने हर्ट हो गया। इज इक्वल टू न्यू dp या फिर dp ऑफ j, इस j तक कितने बना सकते थे तुम? another क्वेश्चन इज, अगर तुम नहीं बना सकते हो, तो आई नहीं है, ये नहीं आई होगा। डी ऑफ जे माइनस वन ऊपर जाना है, आई माइनस वन पे। क्या मैं इस कैरेक्टर से बना सकता हूँ?
अगर सेम नहीं है तो डी पी ऑफ जे आई थिंक क्या तो उससे एक कम वाले के साथ में जाकर इसमें बना सकता तो वो तो अभी बना सकता हूँ। और कोई रास्ता है? न्यू डी पी ऑफ आई होगा ये। और कोई रास्ता? न्यू डी पी ऑफ आई माइनस ये कहना चाहता हूँ मैं जे माइनस वन नहीं कर सकता क्योंकि अगर तुम जे माइनस वन तक बना भी पाओ लेकिन जे भी तो चाहिए तुम्हें। तो इट डजेंट मैटर कि तुम जे माइनस वन तक बना सकते हो। अगर तुम जेथ इंडेक्स नहीं है तुम्हारे पास तो यू फक। राइट। और कोई ऑप्शन? राइट, तो ऐसे से यहाँ तक है मुझे। मेरे पास ये सारे हैं यहाँ तक है। या तो यहाँ से यहाँ तक ये कर लो। राइट। व्हाट कुड समथिंग बी राइट? मैं बोलूँ कि भाई ओके, अगर मैं टी को कम करना चाहूँ तो मैं बोलूँ यहाँ से स्टार्टिंग से वहाँ तक कितना बन सकता था। ये बन सकता था। इतने वेज में बन सकता है बट फायदा तो है नहीं कुछ। तो शुड आई जस्ट डीपी न्यू डीपी? I actually don't think so this will work. I really fucked up something and I can't think of what. Root T of J. Yeah, this is that. एक बार डीपी प्रिंट करके देखनी पड़ेगी क्या हो रहा है। रफ्ता तो अच्छा 2D डीपी नहीं चला रहा ना मैं। लेट मी प्रिंट डीपी अभी। दिस इज फॉर J1 एंड J इक्वल के लिए यहाँ पे प्रिंट कर दो।
1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 6 सारा 1 1 1 1 है which is just wrong. ओके अच्छा नहीं, जब मेरा सिर्फ आर है तो एक तरीका है ये परफेक्ट. जब मेरा आर ए है तो एक ही तरीका है परफेक्ट. आर ए बी एक तरीका. आर ए बी बी यानी आर ए बी पे ही मेरा बढ़ना चाहिए. तो ऐसे आर ए बी पे आया मैं. 0 1 2 0 1 2 परफेक्ट. अच्छा अब ये है ना, ये जीरो तो हो नहीं सकते. दिस हैज टू, दिस शुड बी जीरो. जो 1 1 है स्टार्टिंग में, दिस हैज टू बिकम जीरो. दिस कैनॉट बी योर 1. Even if I ignore this, so आर ए बी तक आई एम गोना बी लाइक 1 में. इज ट्रू. लेकिन जब मैं एक और बी पे आता हूँ, व्हाट आई एम लाइक दिस द सेम शिट. लाइक दिस द सेम शिट नो. देन पिछला वाला, but that is just wrong. क्यों? मैं लगा पिछले वाले का ये. What does this signify? अच्छा उसको आर ए बी बी में दे. सो ये आर ए बी एंड आर ए. What I need is, what I need is this one way. I mean this definitely is one way, right? No, no, this is not one way. अच्छा this definitely is one way. ये one way. But I need to add something more. Plus dp of plus dp of एक कम से मैं पहना सकता था. क्या मेरा अ, अगर मेरा जे सेम है और आई में माइनस कर दूं, क्या तब बन सकता था? अगर बन सकता था वो वाली वे से भी बना सकते हैं. आई जस्ट इग्नोर द वी एंड उस तरीकों से बनाओ. राइट. these are the two fucking ways. बट अब इसमें मेरे को ये सही करना पड़ेगा, राइट. तो वो सही करने के लिए आई कैन सिंपली से इफ आई इज लेस देन जे. जे मतलब कम से कम मेरे को जीरो है तो वन. अगर सेम इंडेक्स है तो या वी कैन मेक. अगर कम इंडेक्स है तब तो तुम बना ही नहीं सकते. न्यू डीपी ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो एंड देन वी कैन कंटिन्यू.
Okay. Somehow it feels like it's working थोड़ा बहुत अब. Let us see क्या. I was so focused कि I was missing something here. जो ये miss कर रहा था वो नहीं मिला. Let's try to submit. Lovely. Fucking lovely. Lovely shit. हाँ, so अभी के लिए मैं स्ट्रीम बंद कर रहा हूँ. I will be back. I will be back in 1 घंटे ish 2:30 तक वापस आऊँगा. And then we will continue some more. Lunch break ले रहा हूँ मैं.